Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and I am going to teach you a very important subsection of chemistry, that is proteins. And here is our big picture. I always like to teach my students through the big picture, and the idea is to organize the information in their brains, right? Okay, I am a big picture guy. Whenever I go to the real world classrooms even, I have a tendency to give big picture to my students, and then I try to build up the finer details into that big picture so as to organize the information in the brains of my students, right? So ये हमारी आज की big picture है. First of all, हम introduction to proteins को discuss करेंगे. Secondly, we'll talk about the building blocks of proteins, which are of course amino acids. And thirdly, we will discuss in detail the levels of protein organization, और उसके बारे में बहुत सारे misconceptions हैं जो कि आपकी मैं फिक्स करूंगा. एंड देन विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप. एंड फिफ्थली विल टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स. और लास्ट पे हम प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द प्रोटीन्स. I've got a question for you. Total types of amino acids found in cells and tissues are, right? So total types of amino acids जो कि cells या tissues में आपको मिलेंगे, इसका आंसर क्या होगा? 170. हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि how many amino acids they can constitute proteins, तो उसका आंसर होता 25. और अगर आपसे पूछा जाता कि most commonly कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, तो इसका आंसर होता 20, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं जिनको हम आगे चल के भी रिवाइज करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द